Good morning, my dear student. This is Preeti Mukherjee. Welcome to the online class of Sriram Public School. Today we are going to discuss the another half of this chapter, chapter 5, and the name of this chapter is Industries. And today's topic is classification of industries on the basis of ownership. As you know, in the previous videos, in the previous class, we have learned that the classification of the industry on the basis of the raw material. And there we have find that the industries are divided into three parts. That agro-based industry, mineral-based industry, and the marine-based industry. Then we have learned the classification of industries on the basis of the size. And there we have learned that the industries are divided into two parts. One is small scale industry and another one is the large scale industry. And today we are going to discuss the classification of industry against the classification of industry, but on the basis of the ownership. Okay, then let's start. So on the basis of the ownership, you will find here four kind of industries. One is private sector industry. Two is the public sector industry. Three is a joint sector industry. And the fourth one is the cooperative sector industry. Now, uh, I will explain all this part. So the first part is uh, the first part is the public sector industry. Sorry, the first part is the private sector industry. What is the private sector industry? So, uh, private sector industries are owned and operated by individuals or a group of individuals. I repeat it. Uh, I repeated it once again that private sector industries are those are owned or operated by individuals or a group of individual. मतलब एक इंडस्ट्री बनाया, हम उसका मालिक हम खुद है और उसका मालिक हम और तुम मतलब दोनों मिलकर इसका मालिक है. तो दैट इज कॉल्ड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. ओनरशिप मीन्स जो ओन करते हैं, मतलब एक जगह पर जो मतलब मालिकाना किसका है उसके हिसाब से ये इंडस्ट्री डिवाइडेड हो रहा है. तो अगर मालिकाना किसका है इसके ऊपर अगर डिवाइडेड होगा तो यहाँ पर चार तरीके से तुम्हारा इंडस्ट्री मिलेगा. एक है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक, तीसरा है जॉइंट सेक्टर और द फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर जो है जहां पर मालिकाना मतलब प्राइवेट सेक्टर किसको हम कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री उसको कहेंगे जिसका मालिक हम खुद एक हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब हम और तुम दोनों मिलकर बनाया है ऐसे. तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इसको कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. private sector industry, not individual, private sector industry, slip of tongue, sorry. And then the public sector industries. Public sector industries are owned or operated by the government. तो जो चीज गवर्नमेंट ऑपरेट करते हैं, जो चीज का ओन है गवर्नमेंट, उसको कहते हैं पब्लिक. नाम है पब्लिक, इसका मतलब पता ही चल जाता है कि उसका ओनरशिप किसका होगा, पब्लिक का ही होगा. तो गवर्नमेंट का है मतलब उसका तो पब्लिक का ही हो रहा है ना, कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं. उसके बाद मतलब ये सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी जेब से तो पैसा नहीं दे रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद ये इंडस्ट्री बना रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. सो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जो ओनर बाय द पब्लिक, नॉट पब्लिक मीन्स दैट गवर्नमेंट. तो ओनर बाय द गवर्नमेंट. तो वहां पर दो in your textbook you will get two example that
Hindustan Aeronautic Hindustan Aeronautic Limited. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एक एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो ये दो एग्जांपल है जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जांपल। और दूसरा जो पॉइंट, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा जो पार्ट है, मतलब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री किसको कहेंगे? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल। जो ऑपरेट करते हैं स्टेट एंड इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों मिलकर, एंड मैंने बताया है ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब स्टेट के साथ इंडिविजुअल भी रह सकते हैं और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल भी रह सकते हैं। ये मिलकर, स्टेट के साथ ये मिलकर जो बनाते हैं इंडस्ट्री, उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। समझ में आया? मैं और एक बार बोलती हूँ, देखो बोल रही हूँ, देखो कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जॉइंट मतलब दोनों है, जॉइंट मतलब दो है ना, तो दो कौन कौन है? एक है स्टेट, ये है फिक्स्ड, तो स्टेट के साथ और कौन होगा? स्टेट के साथ एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब तुम खुद हो सकते हो, या फिर तुम्हारा कुछ ग्रुप हो सकता है जहां पर तुम और मैं दोनों मिलकर एक इंडस्ट्री बनाया है, तो जो भी है, तो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ये भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। और इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है, मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एक ही एग्जाम्पल है, तो तुम लोगों को ना ये एग्जाम्पल याद रखना होगा। यू हैव टू रिमेम्बर दिस एग्जाम्पल्स दैट Maruti Udyog Limited, this is an example of the joint sector industry. Steel Authority of India Limited, this is the example of the public sector industry. So don't be stuck. And then it comes to the cooperative sector industry. So cooperative sector industries are owned by, owned or operated by producers or suppliers, by raw materials, workers, or both. इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल, अमूल अमूल जो दूध है उसका ये हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर का। कैसे? कैसे कि वहां पर पहले दूध आते हैं, उसके बाद वो ये अमूल दूध ये वगैरह सब बनता है ना। मतलब अगर मेरे पास कैटल्स है, वो कैटल के पास हम लोग पहले दूध कलेक्ट करेंगे, देन ये पूरा इंडिया में वो बना के, पूरा अमूल बना के वो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेट करते हैं सब एक दूसरे के साथ। कोऑपरेट किसके साथ करते हैं? ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। तो यहाँ पर भी एग्जांपल दिया गया है आंध्र मिल्क यूनियन लिमिटेड। और भी एक एग्जांपल है सुधा डेयरी are the success मतलब are success stories of the cooperative industries, cooperative sector industries. So you have to remember that actually these examples are so important. You have to remember these things, so important these examples. अगर ये शायद maybe these questions come in your exam, that Steel Authority of the India Private Limited, this is an example of which kind of industries? Joint industries, cooperative sector industries, public sector industries, or private sector industry? Then the answer is what? That the public sector industries. That's this kind of questions may become in your exam. Or Sudha Dairy, sorry, Sudha Dairy is an example of which sector, which type of sector industries. Then it is cooperative sectors. So I hope all of you can understand. If you don't understand, then you can feel free to ask me in my WhatsApp number, or you can call me also.
So this is very easy chapter, very easy chapter. Before ending this video, I'm repeating it once again that uh, we have learned that this industries, what is industry, and we have learned the classification of industry on the basic of the raw material. Then we have learned the classification of industry in the basic of the size, and today we have learned the classification of industry in the basic of the ownership. And here we have find the four kind of the industry: private sector, public sector, cooperative sector, and the joint sector. And I already explained all these things individually. So no more today. Take care and bye.